Dr. Dietrich, who is the founder president of IACS. He's one of the most famous cardiac surgeon who specializes into endovascular techniques. He's got a lot of innovations and a lot of new products which he's designed and made and treated and sort of trained a lot of doctors all over the world. Then we have Dr. Jacques Busquet, who is the president of the IACS. Dr. Michel Henry, who is a cardiologist and who is one of the guys who have trained more than 200-300 cardiologists all over the world. I've been also trained by him in vascular intervention. He's the patron and the chairman of the course. Then we have Dr. K.K. Agarwal, who is, all of you know, is the cardiologist who has a lot of interest in peripheral vascular diseases. What I'm going to do is, I'll ask few questions to the faculty. And वो questions ऐसे होंगे जो public के importance के बराबर के, something which is of importance to public. Very simple questions I'm going to ask, and the international faculty can interact. And my first question, Dr. Khanna, I'll raise a question, then you can invite everyone to answer. Okay. My first thing is that in India, we have 4 lakh people who require vascular surgery, but only 4,000 are done? Yeah, 4,000. But only 4,000 procedures are being done. Okay? Vascular surgery. एक होता है हार्ट को छोड़ के धमनियों का. इंडिया में 4 लाख लोगों को जरूरत है, सिर्फ 4,000 का होता है. ये उसकी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे 4,000 लोग जो लोग करते हैं, उसमें जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस वैस्कुलर सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ हार्ट को छोड़ के बाकी सारी वेसल्स की सर्जरी होती है. हम उसकी बात कर रहे हैं. That's what the whole conference is about. इंडिया की है ये. इंडिया की बताइए कौन कौन सी संस्था की स्टैटिस्टिक्स है? ये आपकी ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. So इंडिया के अंदर में ये न्यू ब्रांच है. It's a new branch in India and it is now slowly picking up. And fellows courses are done every year and they are trained, and for those training international experts are always available. They come and train people. वो आके इंडिया में लोगों को ट्रेन करते हैं. Okay. They come and train. So यहाँ पे जो है लाइव वर्कशॉप्स सुबह से हो रही हैं और लोगों को सिखा रहे हैं. That is the basic purpose. इंडिया में सीखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी सिखाया जा सकता है. We are just doing for preventing amputation. We are just doing 4,000. किसमें? ये इनकी स्टैटिस्टिक्स होती है इनकी. They calculate their statistics, how many procedures are done, and they calculate by the incidence. Actually क्या होता है, हम लोग की रजिस्ट्री होती है, जितनी वैस्कुलर सोसाइटी है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी है, सबकी. जैसे हमारी कार्डियोलॉजी है तो हम लोग की नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल मीटिंग है, जिसमें पूरे साल में हम लोग जितने भी लोग काम करते हैं उसमें अपना डाटा भेजते हैं. ठीक है, ऐसे ही वैस्कुलर सर्जन की होती है. तो ये जो 4 लाख का फिगर है, वो इतने 6 लाख एम्पुटेशन होते हैं इंडिया में, और जो एम्पुटेशन 30% एम्पुटेशन बचाए जा सकते हैं, मतलब 2 लाख एम्पुटेशन बचाए जा सकते हैं. और उन 2 लाख की जगह खाली 4,000 प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं अभी, और समझ लो आप 1,96,000 एम्पुटेशन अगर हम ये प्रोसीजर करें तो बच सकते हैं, लोगों के पैर बच सकते हैं. So let me explain कि एम्पुटेशन पैर काटना यानी कि आर्टरी की अंदर ब्लॉकेज आ गया एंड यू हैव टू कट द लिम्ब. 6 लाख पैर कटते हैं इंडिया में और 4 लाख पैर नहीं कटने चाहिए, और उसमें से सिर्फ 4,000 बच पा रहे हैं. ये नीड है इस सर्जरी की. ये रजिस्ट्री यहाँ से निकलती है कि कितने एम्पुटेशंस होते हैं. No, the field is now picking up. It's only a very few years old. The technology was not available. It's now picking up. अभी भी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 4,000 एम्पुटेशंस को बचा पा रही है. टोटल इंडिया में कितने सर्जन्स हैं वैस्कुलर सर्जन? इंडिया में करीब 150 ट्रेन वैस्कुलर सर्जन. ओनली 150 जो ट्रेन है, स्पेशली वैस्कुलर, खाली वैस्कुलर काम करते हैं. उसमें बहुत से कम, क्योंकि हर चीज़ सर्जरी से नहीं ठीक हो सकती. ये टेक्निक्स वो हैं जो बिना सर्जरी के एक वैस्कुलर सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट को सीखना होता है. इस साल आपने कितने ऐड किए हैं, कितने और ट्रेन कर रहे हैं इस साल? करीब 50 और इस साल इस कोर्स के साथ में नए ट्रेनिंग हो रहे हैं. सो एवरी ईयर द नंबर विल इंक्रीज. लेकिन ये वो सर्जरीज हैं जो बिना सर्जरी के, हम जहाँ सर्जरी नहीं पॉसिबल है उसको हम एंडोवैस्कुलर मतलब एंजियोप्लास्टी टाइप की टेक्निक से या स्टेम सेल वाली थेरेपी से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. आप ये बोल सकते हो किडनी की एंजियोप्लास्टी, पैर की एंजियोप्लास्टी, हाथ की
Okay, anybody ask somebody to talk about stem cell? Okay. They want to know. Anybody would like to speak about the role of stem cell in peripheral arterial disease? Then whatever he speaks, Hindi mein kar dena. He will just translate it after that. The stem cell research that's going on worldwide now is actually in two areas. Stem cells for the heart, for coronary circulation, for patients who have myocardial infarction, and also for patients who have congestive heart failure where the heart is not contracting and new cell life may be able to increase the contractions. The other area is in lower limb ischemia, decreased circulation, primarily below the knee. And the research here is mainly injecting stem cells into the muscle area with the hope of growing newer blood vessels to circumvent the obstructions that are in the arteries. I would say overall that the stem cell research is still very primitive. And it's going to be some time before we will have it or routine use for either heart or peripheral circulation. Bone marrow, let me just explain. मैं वो बता रहा हूँ पहले मैं कि हमारे शरीर में बोन मैरो निकाल के उसमें से स्टेम सेल निकाल दी जाती है, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, दैट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. उसको आप कोरोनरी आर्टरीज में डाल सकते हो, उसको आप कंजस्टिव हार्ट फेलियर जिसका हार्ट एनलार्ज्ड है उसको हार्ट को स्ट्रेंथन बना सकते हो, और जिसके पैर काटने की नौबत आ गई है उसके पैर के अंदर में डाल के उसके पैर को काटने से बचा सकते हो. ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई हो रहा है, इंडिया में भी ट्राई हो रहा है. तो मैसेज ये है कि इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड द रिसर्च फ्रॉम अदर प्लेसेस. व्हाट इज द सक्सेस रेट नाउ करना? सक्सेस रेट इसमें यह है कि करीब 20 से 30% लोगों को हम इनका नई वेसल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हम हर मरीज में गारंटी कर सकते हैं कि इसमें फ़ायदा होगा और इसमें फ़ायदा नहीं होगा. सो 20 से 30% एम्पुटेशन बच जाएंगे, उनके हार्ट के अंदर में इंप्रूवमेंट आ जाएगी. और ये हमारे देश से ही तो गणेश जी को स्टेम सेल से तो बनाया था, स्किन से, तो हमारे देश की असली लोग भूल गए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन 20 to 30% लोगों में फायदा होगा. 20-30% मोर एम्पुटेशन कैन बी अवॉइडेड. स्टेम सेल का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हम आदमी से खुद ही से निकालते हैं और उसको कंसंट्रेट करते हैं, खुद ही में डाल देते हैं. अभी वो रिसर्च में है तो 20-30 हज़ार रुपये जो करने में लगता है, जो उसको कंसंट्रेट करने में वही लगता है. अभी कमर्शियली अवेलेबल ये ट्रीटमेंट नहीं है, अभी एक प्रोटोकॉल और रिसर्च के अंडर है, इसलिए कोई भी सेंटर इसको चार्ज नहीं करता. इसको खाली जितना सामान लगता है और जो प्रोसेस में पैसा लगता है वही करते हैं. किसमें? एम्ब्रियो के ऊपर में जो है, तो वो अलग अलग टाइप की स्टेम सेल्स हैं, बट जो कार्डियोलॉजी में काम हो रहा है बोन मैरो पे हो रहा है. इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्टेम सेल्स पे कार्डियोलॉजी में काम हो रहा है बोन मैरो के ऊपर में होता है. मैं अभी पूछता हूँ, दे आस्किंग which of the stem cells? Which stem cells? From the embryonic source or from an autologous source from the bone marrow? Which is the better one? Embryonic is not too popular because there's a... Embryonic is not popular. Yeah, but bone marrow is very easy to obtain. You can actually take the bone marrow out in the procedure room, spin down the cells, and inject it right at the same time. So that's the most popular and the easiest. I'll come back to one more question of interest to everybody. Leech therapy India से start हुई है. Leech therapy India से start हुई. Anybody of us have used leech therapy? Pardon? For venous engorgement? Leech? Leech therapy for venous local Anybody? No. thrombosis. No. Yeah. Yesterday, all those people like Collins and all, they have used. I think Ty Collins was listening about it, so that's why. We had two international faculty who are not here, and they talked about a lot about the leech therapy. From India, And Indian leech therapy now they have been using all over the world. Leech one, yeah. All over the world. Now, what about anybody who's worked on erectile dysfunction? Other three? The other question is pudendal artery stenting for erectile dysfunction. Again, not very popular. No. There's nothing approved in the United States, I don't think. Yeah, I think the Zen What are trial. your results?
I mean, the Zen trial enrolled 50 patients, and now there's another one. We have done about 19 patients, but How many patients you have done it? 19 in the last 1 So year. this is what we're talking But about. we are Is only treating complex EDs. Viagra failure. Viagra But, failure it's patients a very different, with it's very difficult impotence. to assess whether they Stenting really can be done. respond or don't respond. That's right, We don't have hard points. जैसे हार्ट की स्टेंटिंग होती है वैसे ही मेल ऑर्गन की स्टेंटिंग करके वियाग्रा जिसमें काम नहीं करती उसके अंदर में भी इंडिया के ट्रायल्स में ये सक्सेसफुल देखा गया। कितने प्रस्ताव में से कितने में सक्सेस रेट? अभी तो आई मीन ये मल्टी सेंट्रिक स्टडी है जो यूएस में हुई थी, जेन ट्रायल है, ZEN जेन ट्रायल। इसमें हाँ ये सारे पेशेंट को ये सारे पेशेंट वियाग्रा फेलियर फेलियर है जिनको इंपोर्टेंस है, वियाग्रा दिया, वियाग्रा काम नहीं करी, उनके ऊपर में ट्रायल हुआ। हाँ जी, ज्यादातर डायबिटीज। आधे से ज़्यादा डायबिटीज। The question was, which are the patients who would respond to pudendal artery stenting? How many diabetics? What is the normal age for ischemic impotence? Okay, my one more question is that all to my international faculty, that my question is that how do you find the Indian interventional cardiologists as far as technique and advancements are concerned? We have seen cases from India being presented. That's a Are they at par with? very good question. Let me answer it this way. In the United States, we read in the newspapers and see on TV that patients are coming from the United States to India for treatment. Okay. ये सवाल मैंने क्यों पूछा है? Because आप सब लोग जानते हैं आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। आप इन्होंने बोला है कि इंडिया के डॉक्टर शैतान है, तो मैं वही पूछना हूँ इन लोगों से कि ये कहते हैं कि अमेरिका के लोग इंडिया में आने को तैयार हैं ये इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के लिए। इसलिए मैंने सवाल पूछा कि they are judging that Indian doctors are at par with international doctors. Yes, this is what he said. Yes. He said for this particular surgery, American patients are coming to India because it's cheaper, and the same level of expertise is there. So, Expertise is there. In fact, in India, what will happen is India may. so now that I have been here and I've been participating in this meeting and I've seen the quality of the work that's being done, I can understand why they would do it. I think it's justified, and I think the results are excellent. Excellent results. इन्होंने बोला कि मैं जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने सारे लोगों को यहाँ पे जो वर्क देखा है, यहाँ पे जो नॉन स्टॉप पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अपना काम लाइव दिखा रहे हैं। दिस इज ये बिल्कुल अमेरिका से एक्सीलेंट वर्क यहाँ पे इंडिया में हो रहा है, एट पार विद अमेरिका। पेशेंट वाला मतलब हमारे अपने स्टाइल के अंदर बड़ा सिंपल है कि आज की डेट में आज की हमारी सिंपल चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर में जो सर्जरी हो रही है, वैस्कुलर सर्जरी हो रही है, वो इतनी चीप है और इतनी अच्छी है कि अमेरिका के लोग भी अमेरिका में ना जाके इंडिया में आ रहे हैं। इम्पोर्टेंसी में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिनको इम्पोर्टेंस है, जिनको मर्दानगी नहीं है, जो वियाग्रा से भी दवाई काम नहीं कर रही, उन लोगों के अंदर में भी 100 में से 70 लोगों को उनकी स्टेंटिंग करके, मेल ऑर्गन की स्टेंटिंग करके आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये तो खाना सा बताएंगे। इंटरनेशनल पेशेंट कोई आया? हाँ आए, उसके लिए भी आए, बट वहाँ से आते हैं ब्रिटेन से, कनाडा से, यूक्रेन एंड कनाडा से आए हैं इसके लिए। बट इसके अलावा करीब करीब सारी बीमारियों के लिए बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ की एक्सपर्टाइज बाहर से कम नहीं है, बल्कि यहाँ का डिवोशन ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत कम है, केयर वहाँ से जैसी है उससे अच्छी है। इंडिया की एक चीज़ है कि इंडिया में लोग लेट स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, अमेरिका वालों ने इंडिया में सिखाया। जब एक बार इंडियन सीख लेते हैं, यहाँ पे नंबर इतना ज़्यादा है कि ये लोग एक्सपर्ट इमीडिएटली बन जाते हैं। एक्सपर्टीज जो है कितने लंबे तक उसका इसका अभी तो ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है, 1-1.5 साल पहले ही से इसका शुरुआत हुई है, तो इसके लंबा ड्यूरेबिलिटी का अभी पता नहीं, बिकॉज अभी तो सब ट्रायल फेज में है, चल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बट इसका पता नहीं है। He's talking about implant for erectile dysfunction. That's a different issue. वो डिफरेंट चीज़ है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना अगर ये काम कर गया तो। नहीं, ये तो जो इसका पुडेंडल आर्टरी स्टेंटिंग बोलते हैं, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी स्टेंटिंग। मेल ऑर्गन आर्टरी की स्टेंटिंग।
बट इससे एक और जो नई चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही है, जैसे जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई थी, ये एयोटिक एन्यूरिज्म होता है, जिसमें कि आर्टरी नॉर्मली तो सक्रिय होती है, इसमें गुब्बारे जैसी फूल जाती है, और ये जब फट जाती है तो पूरे शरीर का ब्लड निकलने में मुश्किल से 5-10 मिनट लगता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए पहले बहुत मेजर सर्जरी होती थी, इन लोगों की सर्जरी नहीं हो पाई, इसीलिए इनकी डेथ हो गई। आज की तारीख में बिना सर्जरी के इतनी नई टेक्निक्स आई हैं जिसको हम आराम से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट है। दूसरी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे डॉक्टर हेनरी ने डिस्क्राइब किया कि गुर्दे को एंजियोप्लास्टी से बचाया जा सकता है, या ब्रेन की आर्टरी को लकवा पड़ने से बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर डीट्रिच, डॉक्टर बस्के जो हैं, ये इसके एक्सपर्ट हैं, जो एयोटिक एन्यूरिज्म होता है, इसको इन्होंने ही डिवाइस बनाई है, इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की डिवाइस टेस्ट करी हैं, और आज वो बीमारियां जिससे कि आइंस्टाइन और जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई, वो आराम से ट्रीट कर सकते हैं। So, आज की डेट में जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो इस बीमारी से बच सकते थे। टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैं उन्हीं को बोलता हूँ, वो आपको बताएंगे। They're asking about aortic endovascular treatment for aortic aneurysm. We lost our prime minister, the first prime minister, because of ruptured aneurysm? Yes, and Albert Einstein. When was that? That was in, I think, 63 or 64, 1964. In the United States and the United Kingdom, about 75% of the patients who are treated for abdominal aneurysm are being treated with the endovascular technology, the stent grafts. It's called EVAR in the abdominal aorta. And I think I'm safe to predict that that percent is going to go up because the technology continues to improve. The patient's in the hospital a day or so. There's no incisions, big incisions, no blood loss, no transfusion in the majority of cases. So it's a very exciting technology that's made taking care of abdominal aneurysms much more effective and cheaper. The same thing is occurring in the chest. The thoracic aneurysms are, most of those now are being taken care of with endovascular technology. And this afternoon, I'm going to present some new data about dissecting aneurysms in the aorta. I think that, what's your percent of dissection here? Pretty high? Pretty high, and we have more of thoracic here. More thoracic. I do more thoracic aneurysm than abdominal. Yeah. I don't know. And I think now the judgment on thoracic aneurysms is where we used to treat some of these medically, the majority now are going to be treated with endovascular technology, and I'm going to show those data this afternoon. आज आफ्टरनून में जो डॉक्टर डीट्रिच का एक जो ओरेशन है वो इसी नई टेक्निक पे है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में काम इन्होंने किया, तो उसी का आफ्टरनून में उसी के बारे में बताएंगे। हार्ट से जो आर्टरी निकलती है उसको एओर्टा बोलते हैं। ये एओर्टा निकल के हमारे पेट में जाता है, थोरैक्स में जाता है, चेस्ट में जाता है, पेट के अंदर में जाता है। ये आर्टरी अगर फूल जाए गुब्बारे की तरह, बीच बीच में लोकलाइज, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, और ये फट सकती है। जैसे पंडित नेहरू की फटी एंड ही डाइड विद इन नो टाइम। इसको पहले ऑपरेशन, इसमें बड़ा मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता था, लोग अल्टीमेटली 1-2 साल में मर जाते थे। अब इसको बिना ऑपरेशन किए स्टेंटिंग की तरह एक वेसल के अंदर में कैथेटर डाल के आप इसमें ग्राफ्ट लगा सकते हो, बचा सकते हो, और 70-75% लोगों को ये पॉसिबल है। एंड इसे और 2 साल के अंदर में 90% लोग इससे बच पाएंगे, और ये कॉमन है, ये अनकॉमन नहीं है कंडीशन। Dr. Dietrich, they ask us the appreciation on carotid stenting in the near future. So what do you think of this technique? Is it safe, and how is it used in US compared to Europe and all the other countries? What is your point? Well, the ISCS, our international society that Jacques is president, we did a study 5 years ago comparing endarterectomy and carotid stenting by the same physician. So the physician had the option of doing the classical endarterectomy
or doing the stenting. At the end of 1 year, the results were equal. Though patients had been followed 5 years, at the end of 5 years, there's no difference in the two technologies. And the stroke rate, a 30-day stroke rate, in both endarterectomy and stenting was 2.1, which is below the minimum. So what that tells you is, if you are trained to do an endarterectomy and a stenting, and you can select your patient based upon where the lesions are and the anatomy and so forth, you can get excellent, equal results with both techniques. The problem is that there are not too many people who have that option of going either way with the same patient set. And if you're not well trained, Dr. Henri is one of the finest carotid stent people in the world. He gets excellent results. But if you're not well trained and you don't know the technology, then the results won't be as good. But our study, our ISCS study, proved that they're equal as long as the operators are skilled on an equal basis. Just to confirm what Dr. Dietrich told you, now we can propose carotid angioplasty to the majority of patients suffering from a carotid stenosis. Is an option, but this technology could be done in experienced centers with experienced operators. That means in a country like India, you have excellent surgeons, excellent radiologists, excellent cardiologists. So we have to train these people in carotid angioplasty. And if these interventionists are well trained, the results are similar, equal to surgery. So that's the future. Because you can do a carotid angioplasty today, and tomorrow the patient can work. It's not the same with surgery. जो इन लोगों ने बोला कि जो स्ट्रोक मतलब लकवा बचाने के लिए दिमाग की आर्टरी में जब ब्लॉक होता है तो उसको हम एंजियोप्लास्टी से ठीक कर सकते हैं. पहले इसी के लिए ऑपरेशन होता था. अब ऑपरेशन और एंजियोप्लास्टी अगर एक्सपीरियंस्ड आदमी करे, जो हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं, तो इक्वल रिजल्ट है और इसका 98% से ज़्यादा सक्सेस है. तो ये कंसेंसस है इसका. So we thank everybody.